Good evening to all of you. So let's write other aspects, applications of blockchain. So one you have written in health. Next you can write in government. So in government, how we can use blockchain. So first you can mention in government subpoint. First subpoint in conducting elections. In conducting elections, blockchain method can prevent. Blockchain method of elections can prevent voter fraud. It can prevent voter fraud. Next in government only, it would help to make public record keeping tamper proof and also would lead to digitization and also would lead to digitization of records. आप लैंड रिफॉर्म्स आपने पढ़ा होगा शायद इकोनॉमिक्स में, और उसमें डिजिटाइजेशन की ओर फोकस ज्यादा है. Everything that we are doing in government sector, we want to digitize it so that it will facilitate, so more and more people could be benefiting out of this one. Next, in government only, help to reduce interoperability issues. It would help to reduce interoperability issues between different ministries and department. Thus improving the coordination between different government bodies. So today the class has been changed, no? So that is the chaos level. Between different government agencies. So most of you are living in Old Rajendra Nagar or nearby areas or some distant places also. आप ओल्ड राजेंद्र नगर में यदि रहते हो तो ये बड़ा बाजार मार्ग है जो सबसे फेमस मार्ग है. ऑल द कोचिंग्स आर ऑन बड़ा बाजार मार्ग. सो हैव यू सीन और ऑब्जर्व कि वो साल भर खुदा ही रहता है, नो कुछ ना कुछ करती रहती है. तो एक बार सीवरेज वाले आएंगे, वो खोद के चले जाएंगे, फिर पीडब्ल्यूडी वाले आएंगे, फिर से उसको बनाएंगे, फिर दूसरे डिपार्टमेंट वाले आएंगे, वो बोलेंगे इस बार पाइपलाइन लगाना है, वाटर पाइपलाइन, फिर से खोदेंगे, फिर से पीडब्ल्यूडी वाले आएंगे, फिर से रोड बनाएंगे, फिर क्या होगा, फिर आएंगे ऑप्टिकल फाइबर वाले कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ले जाना है, दिल्ली में सीसीटीवी नेटवर्क्स लगाना है, तो वो आके फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी वाले आके कोड के चले जाएंगे, और फिर पीडब्ल्यूडी वाले फिर से बना के जाएंगे. So is there duplicacy of the same work? That or it simply means that there is no coordination between different departments. Water अलग department है, sewerage अलग department है, optical fiber या electronics है different department है, और उन सबको इस road के through access चाहिए, and there is no coordination between them. That is why most of the times the developmental works they get so much delayed also. So what if a road is on a blockchain? कि एक रोड, हर जो इंपॉर्टेंट आर्टरीज रोड है उसको वो ब्लॉकचेन पे, तो उससे क्या हो सकता है कि उस रोड में जो भी काम होने हैं वो ब्लॉकचेन में वो सारे इंफॉर्मेशन एडेड है. बड़ा बाजार मार्ग का एक ब्लॉकचेन है, तो कि इस साल ये डिपार्टमेंट के काम है, 3 डिपार्टमेंट के काम है, फिर पीडब्ल्यूडी का काम है,
तो ये पता चल गया कि इस रोड पे 3 डिपार्टमेंट का काम है तो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फिर एक ही बार रोड को जो भी आपको करना है वो आप एक ही बार में सारे पाइपलाइन, सीवरेज, ऑप्टिकल फाइबर्स यू कैन ले डाउन एंड देन यू कैन मेक द road. So it will help or boost the developmental process just by increasing the coordination between the different डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, बट उससे अब जो है प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है क्योंकि बहुत सारा फ्रेगमेंटेशन हो गया। So this is the point that we are saying. It will help in reducing the interoperability issues between different departments and between different ministries. So here you can just add this would boost the developmental process. हाँ, इसी में या हाइफन करके boosting the developmental process or it will boost the developmental process. So these are some important application areas that we have mentioned. Leave some space. I'll provide you with a PDF. From that PDF, you can update more about where blockchains we can use more and what all sectors we can use blockchain more. क्या लैंड रिकॉर्ड्स में भी यूज कर सकते हैं? लैंड रिकॉर्ड्स में इंडिया में नहीं, अभी ब्लॉकचेन मेथड तो यूज नहीं कर रहे, डिजिटाइजेशन कर रहे हैं बट ब्लॉकचेन मेथड यूज नहीं कर रहे। सो मोस्ट प्रॉब्ली इन एग्रीकल्चर वी कैन use for digitization of land records. So you should keep on finding such areas and keep on adding here. Now let's move to leave some space, let's say half a page, and you can add more application areas from the PDF that I'll provide, or you can search for yourself also. Challenges लिखते हैं कि challenges या concerns क्या हैं blockchain के. Do you remember the yesterday's diagram? If you just recollect the diagram that we drew yesterday, उसको देख के आप क्या बता सकते हो क्या क्या challenges हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में या ब्लॉकचेन मेथड में? पहला कि एक ब्लॉक क्रिएट करना है, उस ब्लॉक को फिर ब्रॉडकास्ट करना है, ब्रॉडकास्ट करने के बाद कंसेंसस लेना है, उसके बाद वो फिर ऐड होगा आपके ब्लॉकचेन में। तो इन सारे प्रोसेस में क्या क्या इश्यूज अराइज हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, दैट यू हैव टू पॉइंट आउट। कंसेंसस, यहाँ डेमोक्रेसी में तो मेजोरिटी लाना भी बहुत मुश्किल होता है। सो पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी, हाफ में 50% मेजोरिटी और मेजोरिटी फिर उसमें से प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो कंसेंसस तो इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। So what we are saying on one hand that it is time effective, but on some not in every blockchain will the consensus come easily. So it could be time taking process then. Getting it? Okay. What else? Difficult to make changes. तो हाँ, जो कि genuine errors हो गए हैं, जैसे जिसको बोलते हैं bona fide errors, कि genuine errors हो गए हैं और उस error को भी change करना है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? सारे नोड से परमिशन लेने पड़ेगी। So again it would be delayed, the process could be delayed. Okay, what else? Privacy is not highly ensured. Privacy group as a total की ensured है, जो पीयर टू पीयर नेटवर्क में है उनकी इंश्योर्ड है, बट इंडिविजुअल प्राइवेसी इंश्योर्ड नहीं है। लेट्स से आप पैसे किसी को भेजते हो या पैसे किसी से रिसीव करते हो, और स्पेशली इफ यू आर टेकिंग इट इन कैश और डीलिंग इन कैश, नो वन other than the two parties can come to know that what has actually happened. Yes, in such a transaction there is high degree of किसका? हाँ, ट्रांसपेरेंसी है तो बेनिफिट भी होगा। ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू द आइडिया दैट इट शुड बी हिडन, और इट ट्रांसपेरेंसी वुड बी बेटर इन दैट सेंस। सिचुएशन या किस चीज में लगा रहे हो आप? यस, दैट वुड बी ट्रू। सो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंडेंट। कोई मैल हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं है ना कि वो नोड में एडिशन ऐसे ही किसी का भी हो जाएगा। Anybody who is becoming a member of the node or member of the network, they will be vetted कि ऐसे तो किसी को भी नहीं बना देंगे members। तो वो चीजें तो होती हैं, बट उसके बावजूद कि सिस्टम सारा हैक हो सकता है, that is a possibility। हाँ,
स्टोरेज भी एक कंसर्न होगा। क्यों स्टोरेज कंसर्न होगा? क्योंकि हर एक जो ब्लॉक क्रिएट हो रहा है वो सबके पास ओरिजिनल कॉपी जा रही है, तो हर हर किसी को स्टोर करना है। तो यू आर इंक्रीजिंग द डिजिटल फुटप्रिंट। आप बोल रहे हो कि डिजिटल है, फिजिकल फुटप्रिंट नहीं है, बट डिजिटल फुटप्रिंट भी तो है। उसके लिए स्टोरेज सिस्टम चाहिए होगा, सर्वर्स चाहिए होगा, एंड दो सर्वर्स वुड रिक्वायर पावर एंड इट वुड रिक्वायर कूलिंग। Scalability can be yes, it can be very big challenge also. Yes, हाँ, एक सर्वर पे नेसेसरीली नहीं है, क्योंकि हर जो नोड है वो अपने आप में एक कंप्यूटर है और एक सर्वर है। सो एवरीबडी हैज टू मेंटेन द रिकॉर्ड। एक फाइनल एक सर्वर तो है ही जिसमें पूरा ब्लॉकचेन सेव हो रहा है, बट एवरी इंडिविजुअल इज आल्सो स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन और द blocks that are being created. That is one of the biggest criticism of blockchain. China ने complete blanket ban put कर दिया है crypto trading पे और crypto mining पे. Why? Because of electricity. Because of the electricity consumption. Because these nodes would be running on very high computing power. So they are using high computing power, high software power. They need a lot of storage space, which consumes a lot of electricity. So there is a high carbon footprint of blockchain technology. So China has put a blanket ban on crypto trading and crypto mining because of energy. और क्या हो सकता है? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ आप बोल रहे हो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर इवेंचुअली इट विल टर्न आउट that it is no one's responsibility. What if the entire blockchain is hacked by somebody? Then you would not have any one particular person to go to address your grievance. हाँ, और क्या? ईज ऑफ यूज चैलेंज है, यस दैट इज वेरी ट्रू। ये सारा डिजिटल है, और ये जो नोड्स हैं ये आम आदमी नहीं है। जो भी नोड्स हैं जो इस पीयर टू पीयर नेटवर्क में, दे आर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स एक्चुअली हु हैव अ लॉट ऑफ हार्डवेयर पावर एंड सॉफ्टवेयर पावर। तो इंडिया में तो लोगों के पास बेसिक मोबाइल फोन भी नहीं है। यू हियर द टर्म डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड आपने टर्म सुना होगा, दैट people in urban areas have access to smartphones and internet. People in rural areas do not have access to even smartphones. Even if they have access to a smartphone, they do not have access to internet. So will that be a basic problem for our country or for poor countries, that they will not be able to benefit out of the blockchain method or technology? So these are basic problems. India में electricity ही problem है, India में internet ही problem है. No, in summers you would realize this. So those would be a bottleneck for our country also. Getting it? और पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर चीजें ट्रांसपेरेंट है, पर लेट से गवर्नमेंट इस नेटवर्क से बाहर है, गवर्नमेंट इस नेटवर्क से बाहर है, तो क्या हो सकता है? यस, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये नेटवर्क किसी अनजस्ट पर्पस के लिए भी यूज हो रहा हो, या फिर there would be some social miscreants who could be misusing such technology or such method. How will government have control over this? ये problem cryptocurrency में ज्यादा arise होती है, that will see cryptocurrency, see it would be also based on blockchain. Let's say if you have to send bitcoins and you are receiving bitcoins on blockchain, government cannot come to know कि आपने किसको भेजा है, आपको किससे किससे आया है bitcoin. It could be difficult for the government to know, but eventually government can know, that also we'll see. But imagine a case, economics में आपने पढ़ा होगा कि country का monetary authority कौन होता है? Yeah, central bank, that is RBI. And how it controls inflation? हाँ, inflation ज्यादा है तो क्या करता है? मनी सप्लाई को कम करना है, दैट इज द बेसिक आइडिया। मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट्स या रेपो रेट्स बढ़ा देंगे, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम कर रहे हैं इन्फ्लेशन जब ज्यादा है तो, और उसी टाइम पे बिटकॉइंस का फ्लो होने लग जाए कंट्री में, तो इन्फ्लेशन फिर से मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ गई, आरबीआई मनी सप्लाई कम करना चाह रहा है और बिटकॉइन की वजह से मनी सप्लाई बढ़ गई, तो मॉनेटरी अथॉरिटी बची क्या? विल इट बी एबल टू मीट दैट टारगेट ऑफ +4 4 + -2 वाला?
It will not be able to meet that target. So it will challenge the monetary authority of the country. और एक कंट्री के सॉवरेनिटी के लिए कंट्री का मॉनेटरी सॉवरेन भी होना बहुत जरूरी है. So it can, if it is misused, it can challenge, especially in case of cryptocurrency, it can challenge the authority of the RBI, of the central banks. It can challenge the authority even of the government also. You would have heard government keeps cracking on NGOs कि बाहर से जो funding आती है, it keeps on cracking to check that whether they are funded for legitimate purpose or for illegitimate purpose. So in this case again it would become difficult. तो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है ब्लॉकचेन मेथड यूज करके. गेटिंग द आइडिया? Okay, so what we'll do, let's write the challenges and concern. First you can mention infra challenges, infrastructure challenges. Infrastructure challenges में कुछ सब points लिख लेंगे. First, high requirement of hardware and software power. Next infra में ही multiple copies are created, multiple copies of the blocks are created which needs to be stored, multiple copies are created which needs to be stored on servers, thus increasing carbon footprint, thus increasing carbon footprint. Also इसी point में also there would be need of high degree of cooling. Also there would be need of high degree of cooling of computers and the servers, of computers and servers. Next, in countries like India, electricity and internet is still a concern. India experiences, full stop, India experiences digital divide. India experiences digital divide. That is, rural people do not have access to smartphones and internet. So this technology would appear to be alien to them. So this technology would appear to be alien to them. Next concern that you can mention other than infra, outside infra, building consensus would be time-taking process. Building consensus would be time-taking process. Next, building consensus would be time-taking process. Next, not completely immune to hacking. Not completely immune to hacking. Hyphen, not completely immune to hacking. Hyphen, if all the nodes are hacked. If all the nodes are hacked, then the system would not be safe. Safe. Next, you can mention interoperability issues between old database and new database based on blockchain. Are you able to understand this point? ये point simple यही बोल रहा है कि जो पुराने आपके पास database है, let's say यहाँ पे physical library भी एक बना के रखी है. Do you remember the class library example? Physical library भी है और आपने एक digital library blockchain based पे बना लिया. इन दोनों library को integrate करना बहुत challenge होगा कि कैसे इन दोनों को integrate करेंगे. तो old डेटाबेस सिस्टम और ब्लॉकचेन बेस्ड डेटाबेस सिस्टम को इंटीग्रेट करना चैलेंज होगा. और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंट स्टेज में, इसको बोलते हैं बीटा फेज. सॉफ्टवेयर टर्म्स में इसको बोलते हैं बीटा फेज. जब कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल फेज में होती है तो उसको बोलते हैं बीटा फेज. तो ब्लॉकचेन, क्रिप्टो सब बीटा फेज में चल रहे हैं अभी. ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी मैच्योर हो गई, आपको पता चल गया है या एक स्टैंडर्डाइज हो गया कि यही तरीका है ब्लॉकचेन बनाने का. जैसे कि मोबाइल फोन में आपने चार्जर का जो रेवोल्यूशन देखा है, आज से 5 साल पहले हर फोन का अलग अलग चार्जर था. उसके बाद क्या हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन की ओर बढ़े, मतलब कि हर फोन में एक सी टाइप का चार्जर होना चाहिए. वैसे ब्लॉकचेन कैसे क्रिएट करना है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके लिए भी अभी कोई एक फिक्स्ड स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है.
सो द प्रॉब्लम वुड बी व्हाट कि किसी ने एक ब्लॉकचेन मेथड से, लेट्स से इस क्लास ने एक ब्लॉकचेन का मेथड यूज किया, इथेरियम मेथड यूज करके लाइब्रेरी बना दिया, किसी और ने बिटकॉइन वाला ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म यूज करके लाइब्रेरी बना दिया। अब दोनों लाइब्रेरीज को इंटीग्रेट करना होगा तो भी चैलेंज होगा। इसका मतलब जो ब्लॉकचेन बेस्ड डेटाबेस भी हैं और अलग अलग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बने हैं, उनको भी इंटीग्रेट करना चैलेंज होगा। So an interoperability issue, so you can mention the second sub point between different blockchain based databases